Okay, excess pressure in a liquid drop. Liquid drop में excess pressure is how much? You already know the formulas of excess drop in a excess pressure in liquid drop. Okay, suppose एक bubble is there. Okay, इसमें pressure excess pressure कितना है? Okay, is in equilibrium. This bubble is in equilibrium, right? इसके ऊपर what are the pressure acting on this bubble? Tell me. One is outside pressure, P naught. Everywhere it is up because atmosphere is applying a pressure on the bubble, P naught pressure. Okay, and there is a inside pressure because of air molecules. इस तरफ है ना? Is exerting a pressure on the walls inside. And there is one more pressure, that is pressure due to surface tension. One more pressure, it is pressure due to surface tension. It is always want to molecules to lesser decrease the lesser area, right? We want to have molecules to have lesser area. That's why pressure due to surface tension is coming to picture. Now देखो, this inside pressure is balancing P naught also pressure and surface tension pressure also. Then which is greater? Tell me, which pressure is greater? Inside or outside? Which pressure is greater? Inside. दोनों प्रेशर को ये बैलेंस करना, सो इनसाइड प्रेशर. सो एट इक्विलिब्रियम में इनसाइड प्रेशर is equal to P naught outside pressure plus pressure due to surface tension, right? And so here what is the conclusion? P inside is greater than P naught, and the change in pressure मतलब P inside minus P naught को we call as delta P, change in pressure. This only we want to find always. Change in pressure is always we'll get as 2T by R. R is a radius of the bubble. Derivation जरूरत नहीं है. 2T by R is the formula. Excess pressure कितना ज्यादा pressure है? That is 2T by R always. This is the formula you have to learn. Delta P, change in pressure, is always equal to 2T by R. 2T by R. Okay, so excess pressure inside this is 2T by R is the formula. Okay, suppose this is liquid drop है तो हाँ, तो देखो suppose मान लो excess pressure हमने concave side बोला. Concave side means same only. देखो which side is concave side? This is inside is concave side, right? And outside is convex side. So which side will be always greater? Concave side is always greater. याद रखो, concave side is always greater. Here P naught है तो concave side में कितना होगा? Tell me. P naught plus 2T by R. ये ज्यादा है, excess pressure है ना. Always right. Outside pressure से 2T by R ज्यादा है. So like that we have to tell. Concave side is always greater. So this is concave. Cave है ना, गुफा. Outside is convex. So जो convex दिया उससे 2T by R is ज्यादा है, वो याद रखो. That means you can write like this: P concave minus P convex is 2T by R. T is the surface tension, R is the radius of the bubble. Now tell me, suppose you have mercury. Mercury का will be convex meniscus रहेगा, ऐसा याद है आपको? कभी भी liquid if you see in a mercury में it will have like this shape, convex meniscus रहेगा. Okay, the outside is P naught है. Tell me inside कितना होगा? Concave side is how much? Inside P naught plus 2T by R. Always this is a concave side. Concave side, this is convex side. याद रखने का, concave side is always greater. Excess pressure कितना excess pressure है? Outside से plus 2T by R pressure है. This is the thing you have to understand, right? So you can able to write any shape, right? कितना है तो उतना, right? So this is normal liquid drop है. अगर soap bubble है तो क्या? Tell me excess pressure कितना होगा?
Okay, complete. Since soap has thickness 2 layers, right? 4T by R आएगा, that's it. सोप है तो 4T by R यूज करेंगे एंड लिक्विड ड्रॉप है तो 2T by R लगेंगे. देखो सोप बबल हैज प्रेशर कितना है? डेल्टा P will be equal to 4T by R. Since it's 2 layers, into 2 करने का. This is the excess pressure inside the liquid drop. It has soap bubble का if you do, this is a 2 layers रहेगा. Outside P नॉट है तो थोड़ा इनसाइड कितना होगा? P नॉट प्लस 2T by R, राइट? और भी इनसाइड कितना होगा? P नॉट प्लस 4T by R. ओके, सो इतना एक्सेस प्रेशर रहेगा. सो दैट्स व्हाई चेंज इन प्रेशर इज ऑलवेज 4T by R. वो चेंज कैसा किससे? ऑलवेज वी शुड एबल टू राइट लोअर कॉनकेव माइनस कॉन्वेक्स, ऑलवेज वी शुड टेक. ओके, लोअर प्रेशर बिकॉज इनसाइड ऑलवेज इट इज हायर प्रेशर. समझ आ रहा है? नो क्वेश्चंस करेंगे. हाँ, नोट understood, right? So what is the formula we learned? Excess pressure inside the liquid drop is delta P is 2T by R. R is the radius. Excess pressure inside the soap bubble will be delta P is equal 4T by R. That's it. And if we want to write sometimes equations, you have to use concave ka pressure minus convex ka pressure is always equal to 2T by R or soap at the 4T by R. Okay? Chalo. We'll do the numericals based on this. Karo, still karo. If the excess pressure inside the soap bubble is 3 times the other soap bubble, okay, different radius ka soap bubble hai, then he's asking what is their volumes, ratio of their volumes is how much. Try karo. Sir, in 4T by R, what is T again? Tension, right? Surface tension. 1 is to 27. 1 is to 27. देखेंगे. Yeah, 1 is to 27. So आया? 1 is to 20. Yeah, 1 is 27 is answer. Next. Try karo. They'll combine with the pressure wala. Neatly karo. 0.04 centimeter liquid column balance the excess pressure inside the soap bubble of radius 6 millimeters. Calculate evaluate density of the liquid. Surface tension of the soap T is given to you. So he's telling एक टेस्ट ट्यूब है, एक टेस्ट ट्यूब है which is कितना सेंटीमीटर से? 0.04 सेंटीमीटर से. इट बैलेंस मतलब इधर बॉटम का प्रेशर, आउटसाइड इनसाइड तो ऊपर का वाला जीरो है, प्रेशर इज जीरो. ओके, सो इनसाइड वाला तो जीरो है, राइट? सो इधर प्रेशर कितना है? टेल मी. एज वी गो इनसाइड प्रेशर इज इंक्रीजिंग, राइट? रो जीएच. दिस Wait, प्रेशर इज sir. बैलेंसिंग द On the answer. One second. One second. दिस You प्रेशर want इज the answer in what? Like gram per centimeter cube or केजी kilogram? केजी पर मीटर क्यूब. Okay. This pressure is balancing the excess pressure of the soap bubble. Equate and get the answer. Try. So you get 5 into 10 power 3. What's the unit again? Kg per meter cube. देखेंगे. So we're supposed to find density. Density of the liquid. So equate with pressure with changing excess pressure कितना? 40 by R. Soap bubble में. Equate like this and solve. G you can take as 10 and solve.
Sir, How much? sir, I'm getting 5 into 10 power 4. 5 into 10 cube आएगा. So 5 into 10 power 3. Yes, 5 into 10 power 3. Centimeter to meter convert किया ये वाला. And millimeter to Yes. meter you convert, right? 6 into 10 power of minus 3. Answer solve किया तो you'll get as 5 into 10 cube is answer. Okay? Next one करो. Sir, it's 10 power 4 only. करो. कितना h how much you put? H is 4 into 10 power 4. 10 power minus 4. Minus 4. Why? Yeah. Minus 4. Next. And then Rho R is is only 6 into 10 power minus 4. 6 into 10 power of minus 4. Minus- Why 6 to minus 3? Millimeter है ना? Millimeter is 10 power of minus 3. Okay. Next one करो. What should be the pressure inside the small air bubble of radius this much situated below the water surface? Surface tension is given and atmosphere pressure is given. This air bubble just below the water surface रहेगा. So air bubble and soap bubble are the same only. No, air bubble is different. Soap is soap only. Oh, any bubble only one layer only. Soap is only 2 layers. That's it. So 1.02 into 10 power 5. Yes, perfect. Perfect answer. Outside the pressure P naught है ना? So inside पहले find करके you try to add total pressure P naught plus the bottom pressure. I got like in normal form. Like I didn't write it in 1 second. Oh my. Sir, I didn't write it in the standard form. Standard form में कितना? थोड़ा करो. But if I do in normal form, you get 1027 Yes, good. 102740. Yeah, correct. So 1.0274 into 10 power of 5 is the answer. Okay, understood it, Pranav? So bottom Yes, का pressure we have to calculate plus P naught. Yes, sir. Okay. Next करो. नो करो. JEE Mains क्वेश्चन करो, देखते हैं अभी तक कितना फास्ट बोल रहे हैं ना अभी Coalesce तक. means like collide. हाँ, coalesce means attach. When two soap bubbles of radius A and B is greater than A, coalesce मतलब combine. The radius of curvature of the common surface is how much? देखो, one bubble है, other bubble है, ऐसा रहेगा. बड़ा bubble है ना. One इसका radius है, इसका radius is B,
इसका प्रेशर इज P1, इसका प्रेशर इज P2. ही सेइंग इन दोनों को कोलेज टू फॉर्म वन कॉमन सरफेस रहेगा ना. कॉमन सरफेस का सपोज मान लो दिस इज अ कॉमन सरफेस. इज आस्किंग कॉमन सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाउ मच. Sir, won't it be just one second, one second, one second. नहीं नहीं, अच्छे से करो, ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है. ऑप्शन से गिव ट्राई, चैलेंजिंग देख करो. Yes, greater. Yeah. इक्वेशंस बनाओ, 2 इक्वेशंस एंड देन गेट समथिंग. One second. एंड विच बबल से? सो बबल से. Sir, AB by B minus A. देखें Yeah. Option. What options are A? देखें. So once can you move? So AB by B minus A. So I'm getting Oh, B minus A by AB. no wrong. AB by B minus C is answer. See, first one, Krisha, first one equation apply किया. Tell me P1 का equation क्या आएगा? P1 is equal to So never mind. आया? ये सो बबल है ना. P1 is equal to P naught plus 4T by A. P2 का कितना होगा? Outside pressure is P naught plus 4T by B. एंड इसका प्रेशर कितना है? दिस सरफेस का एक्सेस प्रेशर विल बी हाउ मच? Excess pressure will be how much? P1 minus P2 P2 minus which is more pressure? Tell me P1 P2 inside. P1. किसका? P1 ज्यादा है. So external pressure will be equal to P1 minus P2. And external pressure कितना होगा? इसका pressure total common surface का pressure is 4T by R is equal to P1 minus P2 separate करो. And equate, you will get the value of R. R equal to how much? So separate किया तो क्या होगा? 4T by A minus 4T by B. So 40 cancel, and if you take common, we'll get R equal to AB by B minus A. आया? Understood? हाँ करो. Next करो. Same model. A small soap bubble of radius 4 centimeters is trapped inside the another bubble of radius 6 centimeters without any contact. Let P2 be the pressure inside the inner bubble and P0 the pressure outside the outer bubble. The radius of the another bubble with pressure P2 minus P0 between the inside and outside would be either pressure कितना हो. इसका बीच का प्रेशर मान लो P1 मान लो. Same way apply 2 equations and solve.
So sir, P1 minus P0 will be 4T by 6. So bubble bola that all? Yeah. Yes. जो भी बीच का फॉर्म हुआ ना वो रेडियस का you can take smaller. The So smaller this is the answer in terms of T, right? no values are directly. Have you options? So we want to get decimal. So but they You didn't get, give what once was the again, surface tension. 2.4. For what? 2.4. Cancel हो So they जाएगा. didn't Surface give tension नहीं देते the भी equate करो. Cancel हो जाएगा. So 2.4. Yeah. Always is the combination में always try to form two equations. पहले इसका ले लो surface का. This is excess pressure, right? And then you take the बड़ा surface का. This is excess pressure and form the equation. तो इसका first equation बनाया. Tell me Sir, if P2 minus P1 is equal to 4T by R is how much? बोलो. sir for P2 shouldn't we also include P0? नहीं. First you take one surface, concave surface. Excess pressure inside the drop only I'm seeing. उसका बाहर का जरूरत नहीं है. Only in you this two only will check. And then we are talking about this one means this surface means इस तरफ वाला check करो. That's it. Okay. And first one कितना है? P2 minus P1 is equal to T. 4T by R 4. is 4, right? Next. Yes, and be P1 minus P2. Next one is P1 minus second वाला equation में इस surface का देखो. P1 minus P2 is equal P0. Sorry. P1 minus P0 is equal 4T to by 6. 4T by 6. No use करो. Subtract करो. I want P2 minus P0, right? So if you You have to add, sir, not subtract. हाँ So you have to add, right? anything cancel होने के लिए. Yeah, you have to add for cancel. डायरेक्टली ऐड किया तो देखो आ जाएगा. P2 minus P0 आ जाएगा. That is equal to 4T by ये smaller ले लो. Sir, won't there be T? Yeah, exactly. See, that is excess pressure will be how much? That excess pressure will be equal to इसका pressure. इसका pressure कितना है? Excess pressure कितना है? Delta P is 40 by R, right? See, if you add, what will happen? Tell me. P2 minus P0. P0 is equal to 4T by 4 plus 4T by 6 आया वाला. This P2 minus P0 will be the radius of this one, right? इसका excess pressure कितना है? 40 by R, right? 40 by R. समझ आया? इसका ये inside, see, this is the radius, right? I'm talking about this one. इसके बारे में. ये excess pressure कितना है? Okay. Separate करो. This is nothing but 40 by R. Now equate 40 cancel karo and equate, we'll get the answer. Sir, how's P2 4T by R? Manav, what method you follow? Tell me. So when you add both, you'll get 20T by 12. So 20T by 12 is equals to 4T by R. So all you'll get R is 2.4.
He told what? Like contact P2 is the pressure inside the soap bubble, P not the pressure outside the soap bubble. Radius of another bubble with the pressure difference of, okay, this is not like radius of another bubble whose pressure difference is P2 minus P naught is another somewhere radius of another bubble, this radius of another bubble whose pressure difference is P2 minus P naught between the inside and outside the would be. मतलब inside and outside का pressure is equal to this pressure he told. समझ आ रहा है? So equate करो 40 by this का pressure का 40 by R is equal to this one P2 minus P1 का pressure is nothing but 40 by R बोल के बोला. Just equated. Understood your pronoun? Radius of another bubble. He's talking another bubble whose pressure difference is P2 minus P1 between the inside and outer. इसका pressure जो भी आया that is equal to इसका pressure बोल के बोल रहा है. Okay. So that's why we equated this P2 minus P naught के जगह में I substitute 40 by R. Understood your pronoun? Got it? Yes, sir. Yeah. So answer is, it is 2.4 is answer. Next. I करो. Without help करो. Numerical based है. No options. Same और ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं JEE Mains में. Concept same है but two bubble combine कर रहे हैं. A soap bubble, there be soap bubble है of radius 3 centimeters enclosed in another soap bubble of 6 centimeters. Same type of question. If the internal pressure of the smaller bubble is of radius 3 centimeters in the above system is equal to internal pressure of another single soap bubble of radius r centimeters, the value of r is. Another bubble के बारे में बात कर रहे हैं. हाँ, equate करो. परफेक्ट नंबर आएगा. Sir, I'm getting 1.5. परफेक्ट नंबर आएगा. इक्वेट करो एंड सॉल्व. सेम मॉडल, सेम वो क्वेश्चन कैसे कैसे. इसका इंटरनल प्रेशर इज इक्वल टू इसका प्रेशर इन इक्वेट. Oh, Sir, 2. देखें. So once again, या yeah, sir. 2. wait, sir, over here, P1 minus P naught will be 40 by 6 then. And P2 minus P1 will be 40 by 3. Oh, my bad. Yeah, I did a calculation mistake. Yeah, 2. 2 is आंसर. परफेक्ट आंसर. समझ में आ रहा है? चलो. Now we'll go for an angle of contact. Okay. Next concept is angle of contact. Easy topic है. Tell me what is angle of contact? Angle of contact. मालूम नहीं है? Okay. देखेंगे.
देखो, the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact, tangent to the solid surface measured inside the liquid in term is called as angle of contact. देखो, here दो tangent का बीच का angle है. What are the two tangents? One is tangent of the liquid surface का tangent and solid surface का tangent. दोनों tangent का angle is called as contact angle. Okay, समझ में आ रहा है? देखो, suppose there is a open and capillary बोल के अब आपको आगे आएगा. Suppose we got a concave meniscus. It's a concave meniscus. I want to find the contact angle. Contact angle is between two tangents के बीच में. कौन सा tangent है? One is liquid surface का tangent and solid surface का tangent. दोनों को बीच के angle को we call as contact angle. देखो, liquid surface का tangent draw करो. This is a tangent, right? And at the point of contact में only solid surface का tangent draw करो. इन दोनों को बीच के एंगल को we call as angle of contact. Okay. Similarly, when I put mercury, we'll get convex meniscus. Now we will draw for this one. At the point of contact, liquid surface का tangent draw करो and solid surface का tangent का draw करो, and it should be inside the liquid only. The solid surface का tangent always should be inside the liquid only. Okay. इन दोनों का बीच के एंगल को we call as contact angle. समझ में आ रहा है? Very easy. Contact angle is दो tangents के बीच में, one is liquid tangent, solid tangent के बीच के angle को we call as contact angle. लिखो. And which is less than 90, which is greater than 90? This angle less than 90 means indirectly which meniscus? Which meniscus we call concave meniscus or convex meniscus का? वो याद रखने का. Concave meniscus. अगर greater than 90 है तो convex meniscus आएगा. This is meniscus, ऐसा जिसको meniscus बोलते हैं. ओके, लिखो. Whenever concave meniscus are there, एक containers का above rise होगा. The liquid will rise above. And convex meniscus वो surface से below में रहेगा. Convex meniscus always below the surface में रहेगा. Liquid will fall. It should not be rises. Theoretical questions भी पूछेगा. That time confuse होगा. Less than 90 क्या है? ये क्या है? वो क्या है? बोल के. Covered? Yes, sir. So I'm not drawing the diagram. Diagram draw करो. Contact and that only we will understand. Otherwise, after 1 year, you will not forget. Generally, impure water में this all will happen. Impure water में concave meniscus रहेगा. ये तो mercury है. Mercury में always convex meniscus. Yes, sir. Done. चलो, देखो, impure water में always concave रहेगा and wettability will increase. Wettability means surface से ऐसा रहेगा ना. The impure water को drop में surface table के ऊपर लगाऊंगा, ये wettability वाला increase होगा. Whenever contact angle is less than 90. When contact angle is less than 90, wettability will increase. So इधर क्या क्या आएगा? Theta is less than 90. And which meniscus? Tell me.
Which meniscus? Concave meniscus. Concave meniscus. And liquid will rise. Liquid will always rises. Okay. Liquid rises upwards. Somewhere. And similarly for mercury, what are things you know? Tell me. Theta, convex meniscus है या? Theta is greater than 90 and क्या होगा? Liquid level falls 90 degrees. Angle 135 तक रहेगा वो angle. Okay. Second one is convex meniscus. Always convex meniscus. And if I put the mercury drop, perfect sphere रहेगा and wettability will decrease. इसका जो भी कांटेक्ट है ना, दैट वेटेबिलिटी इज गेटिंग डिक्रीज. ये कांटेक्ट ज्यादा रहेगा सरफेस के साथ, ये वाला थोड़ा कम रहेगा. परफेक्ट बॉल स्फेरिकल रहेगा इफ यू पुट ए मर्क्यूरी बॉल. इसका लिक्विड फॉल्स डाउनवर्ड्स ऑलवेज. दीज आर थिंग्स. थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछेगा. अच्छा से लिखो. एक कांटेक्ट एंगल समझ में आया तो देन कैपिलरिटी कर सकते हैं. Done? Yeah, sir. So some important points लिख लो. For pure water and perfectly clean glass, the angle of contact is 0. Pure water कभी बोले तो भी angle of contact 0 लगाने का. And for pure water and pure silver के angle of contact is 90 degrees. Okay. And for ordinary water and glass, it lies between 8 and 18 degrees. लिखो statements. And mercury and glass का angle of contact is 135 degrees. Mercury and glass का. Pure water and silver का angle of contact is 90 degrees. Suppose मान लो this is a pure water and glass. So ऐसा रहेगा liquid surface tangent and ये वाला ऐसा रहेगा. Angle is 90 degrees. ऐसा रहेगा pure water. So there is no meniscus नहीं रहेगा, straight रहेगा normal pure water. Sure, can you go back once? Okay, sure. So for mercury and 135 degrees. One mercury glass, the angle of contact is 135. Greater than 90, right? So 135. that's what I'm. Okay. Chalo. Some two definitions are there. Cohesive force and adhesive force. Cohesive force सुना होगा ना? Cohesive means दो सेम मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स को कोहेसिव फोर्स बोलते हैं. एडेसिव मींस बोलते हैं ना गम पेपर से एडेसिव कर दिया बोलते हो. दो सरफेस के अदर टू मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स को एडेसिव फोर्स बोलते हैं. सेम मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर मर्क्यूरी दीज आर कोहेसिव फोर्स. ओके. सो लिखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड is called as cohesive force, and adhesive force means force of attraction between molecules of different kind is called adhesive force. And with this we can tell why meniscus will be coming. Concave meniscus क्यों आएगा?
कॉन्वेक्स मिनिस्कस क्यों आएगा, वी विल सी. सो दिस इज द कंटेनर एंड जैसे पानी है पूरा, विल गेट ए कॉन्केव मिनिस्कस इम्प्योर वाटर में. इसमें क्या होगा, ये ग्लास है, ये ग्लास है ना, एंड वाटर है. सो इसमें एडिसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स. देखो सपोज मान लो फोर्स ऑफ वाटर ड्यू टू ग्लास, वाटर ग्लास, फोर्स का एडिसिव फोर्स है ना, ग्लास एंड वाटर के बीच में फोर्स है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स का फोर्स बिटवीन वाटर एंड वाटर. ऑलवेज कॉन्केव में क्या होगा, द कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन दिस, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स. याद रखो कॉन्केव में कोहेसिव फोर्स मतलब ये जो फोर्स बिटवीन वाटर एंड ग्लास का एंड वाटर वाटर का दोनों फोर्स का ग्रेटर है. एंड इसका इन मर्क्यूरी में, कॉन्वेक्स मिनिस्कस में, ये मर्क्यूरी है ना, इसमें उल्टा होगा. कौन सा है, फोर्स ऑन मर्क्यूरी, मर्क्यूरी ग्रेटर देन फोर्स ऑन मर्क्यूरी ग्लास. सो दिस इज हियर कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन एडिसिव फोर्स. इसमें क्या होगा, इसमें उल्टा लिया ना, एडिसिव फोर्स, adhesive force is different kind of molecules, right? So this is adhesive, right? Here adhesive is greater than cohesive. Cohesive means same kind of molecules, right? Cohesive. So adhesive is greater than cohesive. इसमें क्या होगा, cohesive is greater than adhesive. So मैं बस याद रखो, cohesive means those same kind of molecules को cohesive force. Water, water, mercury, mercury, ऐसा को we call as cohesive. एडिसिव मीन्स ऑलवेज उल्टा, मतलब दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में एडिसिव बोलते हो. आप वो चिप का एडिसिव, दिस मटेरियल इज एडिसिव बोल के मतलब मीनिंग क्या है, दिस एंड वी आर मिक्सिंग विद अदर सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं ना, इसको एडिसिव फोर्स. ओके, देन व्हाई दिस कॉन्केव कॉन्वेक्स मिनिस्कस क्यों आएगा बोले तो, लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिजल्टेंट फोर्स. लिक्विड सरफेस इज ऑलवेज नॉर्मल टू द रिजल्टेंट फोर्स. मतलब So there's no general example of cohesive force. जनरल एग्जांपल ऑफ कोहेसिव फोर्स मींस एनीथिंग. देखो सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स का, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर वाटर होने दो, पेपर पेपर होने दो. सी पेपर हैज सो मेनी मॉलिक्यूल्स राइट इनसाइड ईच Yeah. मॉलिक्यूल्स के देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज नथिंग बट कोहेसिव फोर्स. ओके, एडिसिव मींस डिफरेंट मॉलिक्यूल्स लाइक हियर वाटर एंड ग्लास का बीच में ऐसा. ओके, now the resultant force is always normal to the liquid surface is always normal to the resultant force. मतलब क्या होगा देखो, इसमें adhesive force is greater than cohesive force, right? So adhesive force means different वाला, ये they observed the resultant is like this आ रहा है. देखो the resultant is ऐसा आ रहा है. So the resultant कैसा आएगा, tell me. That means the force due to WW cohesive force and force due to WG ऐसा आ रहा है. They observe that the adhesive force is greater than cohesive force. उसके वजह से ये थोड़ा इस तरफ आएगा. This is the resultant. Now देखो, this is always this surface is always perpendicular to the liquid surface. देखो liquid surface is always normal to the resultant force. Liquid surface is like this, right? नॉर्मल है, दैट्स व्हाई इस कॉन्केव मिनिस्कस आ रहा है. इसमें कॉन्केव मिनिस्कस आएगा. whenever you put in water and glass का, इसमें impure water and glass का, always we are getting concave meniscus because आपको adhesive force is greater than cohesive force. याद रखो, एक याद रखो, उल्टा will be the mercury. water का याद रखो, adhesive force is greater than cohesive force. adhesive force इस तरफ आ रहा है and cohesive force इस तरफ आएगा, तो resultant ऐसा आ रहा है. ओके, सिमिलरली इसमें क्या होगा, cohesive force is greater than adhesive force. cohesive force देखो, one force is force on mercury due to glass and force on mercury due to mercury. cohesive force ज्यादा है ना, ज्यादा है तो क्या होगा, the resultant is like this, near to the mercury. मतलब देखो, the liquid surface is always perpendicular to the tangent. देखो liquid surface is always perpendicular to the resultant force. resultant force का perpendicular रहेगा, that's why थोड़ा ऐसा रेज होगा, ऐसा कॉन्केव रहेगा. ओके, माइन्यूट लेवल में ऐसा ऐसा शेप में आएगा. ओके, you'll observe normally capillary tube में normal pipe straw वगैरह, if you put in mercury level, if you see bottom level में, it will be like this convex meniscus side. Okay, so this is cohesive, understood? Cohesive means same kind of molecules, adhesive means different kind of molecules.
सो कैसे याद रखने का ये वाला, ऑलवेज एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स इन वाटर, एक याद रखो, उसका उल्टा विल बी द मर्क्यूरी. सो ए विल कम फर्स्ट, राइट? वाटर में ए विल बी कमिंग एंड सी लेटर विल बी कमिंग द सेकंड. सो एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स इन द वाटर, राइट? So now we'll go for the capillarity. Capillarity means capillary action बोलते हैं ना. Capillarity means याद है? Capillary means एक straw ले लो, straw में two ends are there, two ends are खाली, right? Empty, right? मतलब इधर भी empty, bottom में खाली है, ऊपर भी खाली है. Just dip in water. उसके वजह से क्या होगा मालूम है? The liquid level will rise. straw में थोड़ा level तक rise होगा. That is called capillary action बोलते हैं. और लिक्विड लेवल कैन ड्रॉप इन मर्क्यूरी में, सरफेस से बिलो जाएगा. सो दिस कॉल्ड कैपिलरी एक्शन. ओके, सो देखो ऐसा रहेगा, देखो जूम बोल के राइज होगा. देखो व्हेन आई पुट इन वाटर में विल राइज, यू कैन सी वेरी थिन ट्यूब, वेरी थिन ट्यूब. इफ यू पुट इन वाटर में द लिक्विड लेवल विल राइज, इट क्लाइम्स लाइक द स्ट्रॉ. दिस इज नथिंग बट कैपिलरी एक्शन बोलते हैं. दैट हाइट वी आर कैलकुलेटिंग, आवर इंटेंशन इज टू कैलकुलेट द हाइट फ्रॉम द लिक्विड सरफेस से कितना ऊपर गया, दैट हाइट फाइंड किया तो क्लास डन. ओके, चलो. If the narrow glass tube open at both ends is pushed in the water as shown in figure, the water rises in the tube to a height above the surface. The narrow the tube, the greater is the height. देखो बहुत पतला ट्यूब में the greater the height in which water rises, this phenomenon is called capillarity. This phenomenon is called capillarity. देखो पतला ट्यूब है तो ज्यादा हाइट जा रहा है, this is more height, h dash. and थोड़ा मोटा ट्यूब है तो h. So h dash is greater than h. So this action is called capillarity. The narrow the tube, the greater the height at which water level rises. Sir, how do I cut this short? Short karo. When you insert any straw tube, the liquid level rise. That is called as capillary. Capillarity. Drop भी हो सकते हैं mercury में, but surface से below or above जाएगा. That height is called capillary rise. And the thinner the tube, the greater the height. Oh, height only we are trying to find. Just formula will learn this. कुछ नहीं. Yeah, so done. Okay. चलो अब देखो ये डिप्रेस भी हो सकता है. देखो बॉटम में जा सकते हैं ये वाला मर्क्यूरी में, सरफेस से बिलो भी जा सकते हैं. इसमें क्या होगा देखो, if the same capillary tube is placed in mercury, the liquid get depressed below the outside level. The depression increases as the diameter of the tube decreases. देखो depression is increasing. इधर से इधर तक है, ये वाला ज्यादा हो गया, राइट? डिप्रेशन उल्टा हो रहा है मर्क्यूरी में, राइट? Now that height we are calculating, कितना rise और fall हुआ, that उसका फॉर्मूला रन किया तो कैपिलरी का खत्म हो जाएगा. Done? Yeah, so done. Yeah. Okay, height of the capillary rise. That height formula we are learning. Okay, height का formula है simply h is 2t cos theta by r rho g. Very important. 2t cos theta by r rho g. देखो suppose मान लो this is a liquid, इसका density rho है, इसका tension is t. I inserted the tube, right? Tube का ये very important है. ये capillary tube का रेडियस है स्मॉलर, रेडियस ऑफ द ट्यूब. आपको कैपिलर स्मॉलर में बहुत कंफ्यूज होगा लास्ट में, दैट्स व्हाई लर्न करो. स्मॉलर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, ऑलवेज याद रखो.
स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ट्यूब, नॉट मिनिस्कस का, रेडियस ऑफ द ट्यूब है. एंड थीटा क्या है? थीटा इज द कांटेक्ट एंगल, एंगल ऑफ कांटेक्ट. एंगल ऑफ कांटेक्ट मालूम है ना, लिक्विड सरफेस एंड सॉलिड सरफेस का टेंजेंट. Rho is density of the object or density of the liquid? हाँ, रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ऑब्जेक्ट नहीं है. दिस इज द सॉलिड टेंजेंट एंड लिक्विड, इन दोनों का एंगल को वी कॉल्ड एज थीटा, कांटेक्ट एंगल. डेंसिटी ऑफ द लिक्विड है. And h is the height, how much height it rises. This height only we are trying to find. कितना ऊपर गया पानी. Or how much fall also. Both are same. We are trying to find by using formula क्या है? 2t cos theta by r rho g. R is the radius of the tube, not meniscus का radius है. Okay, आ गया समझ? And h should be always a vertical height. ये h जो भी डाल रहे ना, that this h जो भी आ रहा है ना, that is vertical height, not slant height वगैरह वैसे नहीं है. Vertical height only we should take. Done? Yes. Formula याद है? 2t cos theta by r rho g. करो. ये तो मालूम है ना. देखो लेस देन 90 है तो क्या होगा? थीटा लेस देन 90 तो हाइट इज पॉजिटिव एंड थीटा इज इक्वल 90 मींस हाइट 0 है. ए लेवल ज्यादा मतलब ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा. व्हेन थीटा इज ग्रेटर देन 90, h इज नेगेटिव. देखो हम लोग मर्क्यूरी लिया ना एग्जांपल, ग्रेटर देन 90 है, सो h इज नेगेटिव में जाएगा. फॉर्मूला क्या है? 2t cos theta by r rho g. So terminologies you have to know. Theta is a contact angle. चलो करो. If the surface tension of the water is 0.06 Newton meter, then capillary rise in the tube of the diameter this much is how much? H is telling to find. Calculate. Answer is in centimeters. So मीटर में आने के बाद you can convert into centimeters finally. So what's the density? Should we take as 10 power? Should we take Density is in kg में 10 power of cube 1000 है ना. So what should we take in centimeters? But see, surface tension, everything is in meters, right? Again, problem Newton meter है ना. So meter में convert कर लो. लास्ट में आंसर आने के बाद centimeters में you can take. Okay. 2.4. देखिए. टू टी cos theta by r rho g. So 2.4. Yeah, 2.4. 2.4 is the answer. करो. Water rises to a height 10 centimeters in the capillary tube of mercury, and the mercury falls depth of this much. Is comparing now. In the same capillary tube, the density of mercury is given. Angle of contact between mercury and water is given. Mercury and water का angle of contact is given. The ratio of surface tension of water and mercury is so much. Is comparing. Just formula use करके divide करो, आ जाएगा. इसका दोनों का फॉर्मूला यूज करके डिवाइड करो, गेट द आंसर. रेशियो ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एंड T1 by T2 is how much?
So if you take root 2 as 1.4 or something. Mass minus 1 by root 2. No. Oh my. He told to take that much. Class 135 is minus 0.7. So they're asking mercury to water or water to mercury? Water to mercury. Okay, sir. I got 5:34. Like approximate. Okay, देखेंगे. Sir, I got 5:35. Yeah, 5:34. 534 is answer. Just formula लगा के divide करने के, that's the question. So are these capillary questions there in the 20 the paper हाँ, but topic 2 का done आप पूरा questions पूरा. the first thing which you sent I did, like I'm almost done with that. हमारे second one I sent that again. Yeah, Topic 2. second one I have to do now. हाँ करो, अच्छे से करो. Then होने के बाद बोलो third also I'll put. तो 5-10 minutes में पूरा चैप्टर हो जाएगा, खत्म करेंगे आज. हाँ हो गया. So just if you divide h1 by h2 वगैरह divide किया तो we'll get final answer is 5:34 is answer. Then yeah, next one करो. ये करो. Water rises to a vertical capillary tube up to 2 centimeters. First one is the given 2 centimeters तक rise हुआ. Another capillary tube whose radius is 1/3 of it. Okay, how much water will rise? If it is 1/3 of it, how much water will rise? And if it is, if the tube is inclined at 60 degrees with the vertical, then up to what length the water will rise to a tube? मतलब L value is asking. Same question में L value is how much? So Same won't liquid. won't it just be 6? Okay. What's the other question? And he's Length. asking length of the water. मतलब if I fold with 60 degrees. Wait, that's then cost. length. That's cost. 1 second. 120 6. 1 second. Cos 60 is half. 6 by 0.5. How much is that? 12. Wrong. So 6 by 0.5. No. See, H how much they given? 2 centimeters, right? Yeah, but the water will rise is 6, right? But the question L they asked, cos 60 is equal to, right? no, sir, L cos 60 will be 6, right? Because this is the length of the water will rise. From the previous question, we got HS 6, no? देखो, water rises in the capillary tube up to height of 2 centimeters. इतना rise हुआ. If another capillary tube whose radius is 1/3 of the tube, yeah. Yes, equal. कितना आ रहा है, कृष्णा? So if you equate it to 2, you'll get 4. So the first answer is it 3. Why tell me? इसका So because radius H is is 1/3. inversely proportional. 1/3 of the. This is R. So now H is inverse proportional to? To R. Yes. So क्या होगा? So if R is decreased by 3, then So H is increased by 3. H2 by H1 So it'll be is 6 equal now. to R1 by R2. So H2 is how much? H2 by H1 is 2 is equal to R1 is R by 3. So क्या होगा? ऊपर 3 H2 is 6.
right? Now h2 is 6. Now क्या है, if I incline the thing, so क्या होगा, इसका cos 60 is equal to 6 करने का. So L cos 60 is equal to 6. Cos 60 is 1 by 2. L is 12. Okay. चलो. Now radius of the tube and radius of meniscus. Last topic. 2 minutes निकल जाएंगे. Okay. Radius of the tube and radius of the meniscus का. याद है रिलेशन क्या है बोल के? देखो. इसमें अभी दो थिंग्स है. स्मॉलर कैपिलर का इंपॉर्टेंट है. स्मॉलर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द ट्यूब. ट्यूब का रेडियस है. कैपिलर इज व्हाट? रेडियस ऑफ द मिनिस्कस. ये मिनिस्कस का रेडियस है कैपिलर. याद रखो. कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द मिनिस्कस. स्मॉल आर इज द ट्यूब का रेडियस है. एंड इफ आई टेक द राइट एंगल ट्राइंगल इन दिस में, now apply cos theta. What is cos theta is equal to? Opposite adjacent by hypotenuse. Adjacent is nothing but r only. R by r. Therefore, smaller is equal to r cos theta. This is the relationship between smaller and capillary. Capillary is the radius of the meniscus, and smaller is the radius of the tube. This so r smaller is tube ka, and ये वाला meniscus का. Okay. Now if I substitute in the formula में, h is equal to, formula क्या था? 2t cos theta by r rho g, right? Here what is r by cos theta? देखो r by cos theta can write. R by cos theta is capital R only. So h equal to 2t by capital R rho g. In terms of radius of meniscus में 2t by capital R rho g on the videos. 2t by capital R rho g. This r is nothing but radius of the meniscus. Now इसमें क्वेश्चन है. Suppose मान लो you tell me I took one container, water is there. I took one tube, I inserted in the container. The water level rises to suppose 5 centimeters. Okay, tube का मैं insert किया, it rises to 5 centimeters. Okay, मैं निकाल के मैं क्या किया, मतलब सरफेस से 5 centimeters तक ऊपर पानी आया. Okay, मैं निकाल के मैं क्या किया, सरफेस से मैं कट कर दिया. Such a way that surface, if I insert a tube, surface से 3 centimeters से रहेगा अभी tube. Now if I insert, what will happen? तो मैं फर्स्ट एक पानी लिया कंटेनर में, एक ट्यूब है, आई इंसर्टेड द ट्यूब. सरफेस से इतना तक पानी आ गया, पूरा अप टू टॉप तक आ गया 5 सेंटीमीटर से. मैं क्या किया, इसको कट कर दिया, 3 सेंटीमीटर तक की बनाया. देन व्हाट विल हैपन टू द, इफ आई इंसर्ट इन द ट्यूब में? Sir, it will go down. It will overflow बोल के लगेगा, बट नहीं, आंसर इज रॉन्ग. सो इट विल नॉट ओवरफ्लो. वो क्या करेगा, वो अपने आप रेडियस ऑफ मेनिस्कस को चेंज करके it will come up to top level, but radius of meniscus will change. That is only concept called rise of liquid in capillary tube of insufficient length. लिखो insufficient length हो जाएगा 1 मिनट में. insufficient length में, insufficient length क्या है, मतलब आई टोल्ड इट स्टार्टिंग में h का 5 सेंटीमीटर था, बट कट किया तो 3 सेंटीमीटर में. हम लोग लगेगा कि नहीं तो इफ दैट इज हैपनिंग हैप्पीली, मदर बोलेगा घर में रिलेटिव सारे कुछ करो बोले तो यू विल चेक फर्स्ट 5 सेंटीमीटर में कट करके लगा दे तो आराम से जुम बोल के आएगा. पीपल सोचेगा अरे वाओ क्या फिजिक्स लगा है, पूरा कॉन्सेप्ट लगा है बोल के. सो फाउंटेन जैसे बनेगा ना, ऐसा नहीं होगा. इनसफिशिएंट में इट विल चेंज द मेनिस्कस ओनली. सो आपको क्या करने का, simply use this formula. H equal to normal क्या formula क्या था, 2t by r rho g, right? Okay, इसमें क्या क्या constant है, t constant है, 2 constant है, g constant है, and this one constant, right? Rho is constant, right? So therefore hr, I am taking cross multiply, is equal to 2t by rho g. ये पूरा constant है ना, constant, ये पूरा constant है ना. So therefore I can write like this, h1 r1 is equal to h2 r2. Very important. Where h1
is क्या है? Height calculated, which you calculated actually when you dip करके calculate किया ना, that one you have to write H1. R1 is the original meniscus का, ओरिजिनल मिनिस्कस मतलब ओरिजिनल ट्यूब लगाने के बाद पानी लाया ना, उसका मिनिस्कस है. बाद में क्या होगा? H2 तो आप कैलकुलेट करने वाले, मतलब फाइनल जो हाइट है ना, दैट वन. R2 इज व्हाट? फाइनल मिनिस्कस, फाइनल मिनिस्कस रेडियस. तो मैं ओरिजिनल वन क्या है? आप कैलकुलेट करके 5 सेंटीमीटर बोला ना, दैट वन यू हैव टू टेक द ओरिजिनल वन. एंड रेडियस ओरिजिनल में था ना, दैट इज द R1. बाद में क्या होगा? आप कट किया ना, उसका हाइट इज H2 एंड जो R2 है अपने आप को चेंज करके R2 बनाएगा. दैट इज द थिंग. ऑलवेज इनसफिशिएंट लेंथ में यूज दिस फॉर्मूला H1 R1 is equal to H2 R2. Can before that we have to calculate H1 original one, then only you have to substitute here by using this formula, normal formula. और थीटा दिया तो थीटा का यूज करो, R में दिया तो कैपिलर का यूज करो. कैलकुलेटर यूज करो, एक क्वेश्चन करो, हो जाएगा, चैप्टर डन. H1 R1 इक्वल टू H2 R2 हो गया कंप्लीट. चलो आगे करो, आगे करो. कैलकुलेटर यूज करो चाहे तो, नो प्रॉब्लम. A vertical capillary with inside diameter this much is submerged into a water. He put the tube in water so that the length of its part emerging outside the water surface is equal to 25 centimeters. मतलब we cut करके 25 centimeters लगाया initially. Find the radius of the curvature of the meniscus. मतलब new meniscus कितना है? R capillary is asking to find. Surface tension is given to you and theta 0 degrees बोल के बोला. Okay. So you want the answer in like which unit? I want in yeah millimeters or meters, no problem. So पहले आपको H1 कैलकुलेट करो, H1 original one by using the formula. Then use The the original formula. one you'll get as 59.6 millimeters. Calculate करो, don't simply tell the So I answer. used calculator and I got it. कितना? 59.6 millimeters. Okay, 59.6. I took G as 9.8. हाँ? I took G as 9.8. If you take 10, Okay. I think you'll get 60, sorry. ठीक है, 9.8 ले लो. 59.6 है ना approximately. Okay, that is H1. And radius कितना है original one? This is radius of the tube, right? 0.25. 0.2. And theta is 0 degrees. So radius of the tube and radius of the meniscus is almost same, right? Here in this way. Now R1 also you got. How much that is? 0.25 millimeters. Yeah. Now he's telling to find what? R2. H2 is 25 centimeters. Now calculate. So H1 R1 is equal to H2 R2. wait, so sir, 59.6 into 0.25 is equal to 0.25 into R2. So by नीचे करो 0.25 कितना होगा? Then you get 0. Wait, 1 second. Millimeters and Yeah. meters. You get 59.1 second, 25 by 100. 1 second, 25 by. Yeah. So you get 59.6 divided by 100. That's 0.596 millimeters. Yes, 0.596 millimeters. This is a complete chapter on mechanical properties of fluids done successfully. Okay.